Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to solve numerical on R-2R ladder digital to analog converter. Before coming to this lecture, watch the previous video lecture on R-2R ladder. Then come back to this video lecture. Let's start with the first numerical number 1. What are the output voltage caused by each bit in the 4-bit R-2R ladder if the input levels are 0 is equal to 0 volt and logic 1 is equal to plus 10 volt. So you have to find out the output voltage for each bit. So how many bits are there? 4 bits are there. तो हर एक बीट के लिए आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है. जब 0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट है एंड लॉजिक 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट है. क्वेश्चन नंबर बी इन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट फुल स्केल वोल्टेज in this example? So come to the first sub question, the output voltage caused by each bit in 4-bit R-2R ladder. हर एक बीट की वजह से कितना आउटपुट वोल्टेज कंट्रीब्यूट हो रहा है वो पूछा गया है. How many bits are there बच्चों? So there are 4 bit. So in this case the 4 bit I consider it as a DCBA. यहाँ पे मैं रफली लिख रही हूँ. तो D in this case is my MSB and A in this case my LSB. And we already discussed in case of R-2R ladder, the voltage contributed by the MSB is V by 2. The voltage contributed by the next bit is V by 4. The voltage contributed by the third MSB is V by 8 and the voltage contributed by the LSB is V by 16. So I directly write down V by 2, V by 4, V by 8 and V by 16. तो फर्स्ट MSB के वजह से कितना वोल्टेज कंट्रीब्यूट होता है? तो V by 2. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ लॉजिक 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट. सो पुट द वैल्यू ऑफ V एज अ 10 वोल्ट. सो 10 by 2 is coming out to be 5 volt. So voltage contributed by the MSB is come out to be 5 volt. सेकेंड MSB के वजह से कितना वोल्टेज कंट्रीब्यूट होता है? तो V by 4. So the value of V is of a 10 volt. So 10 by 4. So it is coming out to be 2.5 volt. The voltage contributed by the third MSB is V by 8. The value of V is 10. So 10 by 8. After solving this, it's come out to be 1.25 volt. And the voltage contributed by the LSB is V by 16. Put the value of V as a 10. So 10 by 16. After solving this, it's come out to be 0.625 volt. So this is the voltage contributed by the each bit. Now the question number B is asked to you, find out the output full scale voltage. फुल स्केल वोल्टेज तभी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है जब सभी बीट क्या रहते हैं? हाई रहते हैं. सभी बिट हाई है मतलब सभी इनपुट किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो वोल्टेज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो यू विल एड ऑल द वोल्टेज विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच बिट. MSB की वजह से कितना वोल्टेज कंट्रीब्यूट हो रहा है? तो V by 2. सेकेंड MSB की वजह से कितना वोल्टेज कंट्रीब्यूट हो रहा है? तो V by 4. थर्ड MSB की वजह से कितना? तो V by 8. LSB की वजह से V by 16. जस्ट नाउ यू गाइज फाइंड आउट. लेट्स पुट द वैल्यू. V by 2 is come out to be 5. V by 4 is come out to be 2.5. V by 8 is come out to be 1.25. V by 16 is 0.625 as per this example. After performing the addition is come out to be plus 9.375 volt. So full scale output voltage in this example is come out to be 9.375 volt. Hope so you guys are clear with this first numerical. Now come to the second numerical. What will be the output voltage of a 4-bit R-2R ladder corresponding to the binary input? The two inputs are given to you. A 1011, B 0010. तो इस इनपुट के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो वी हैव टू फाइंड द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज. So first in solution write down the formula. So analog output voltage is given by V0 2 raised to the power 0 plus V1 2 raised to the power 1 plus V2
2 raised to the power 2 plus V3 2 raised to the power 3 upon 2 raised to the power n. But in this case the value of n is equal to what? 4. So पहले बाइनरी इनपुट के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे. The first binary input is 1 0 1 1. So in this case 1 0 1 1, the value of V0 is 1, the value of V1 is 1, V2 is 0 and V3 is 1. So in this case we guys are using this formula to find out the analog voltage. So let's put the value. So analog output voltage is equal to, the value of V0 is logic 1 and they guys are given you the value of logic 1. Logic 1 is of 8 volt. So 8 into 2 raised to the power 0 plus V1 is also logic 1. Logic 1 is of 8 volt. So 8 into 2 raised to the power 1. V2 is 0. So logic 0 is 0. So 0 into 2 raised to the power 2 plus V3 is logic 1. Logic 1 is of 8 volt. So 8 into 2 raised to the power 3 upon कितने बीट का क्वेश्चन है? तो 4 बीट का क्वेश्चन है, तो 2 raised to the power 4. So let's solve. 8 into 2 raised to the power 0 is 1 plus 8 into 2 raised to the power 1 is 2. 0 multiplied by anything is come out to be 0. 8 into 2 raised to the power 3 is 8 upon 2 raised to the power 4 is 16. 8 into 1 is 8. 8 into 2 is 16 plus 0. 8 into 8 is 64 upon 16. After performing this addition, 8 plus 16 plus 64 is come out to be 88 by 16. Perform this calculation, it's come out to be 5.5 volt. Okay, so analog output voltage contributed by this binary input is coming out to be 5.5 volt. Now come to the second one, B. The second binary input is given to you 0 0 1 0. Same formula we guys are using here. So in this case V0 is logic 0. So logic 0 is 0. 0 into 2 raised to the power 0. V1 is logic 1. Logic 1 is of 8 volt. So 8 into 2 raised to the power 1. V2 is logic 0. Logic 0 is of 0. So 0 into 2 raised to the power 2. And V3 is logic 0. So 0 into 2 raised to the power 3 upon 2 raised to the power 4. 4 bit का क्वेश्चन है. 0 multiplied by anything is come out to be 0. 8 into 2 raised to the power 1 is 2. 0 multiplied by anything is 0. 0 multiplied by anything is 0. 2 raised to the power 4 is come out to be 16. So 8 into 2 is 16. 16 upon 16 it's come out to be 1. So the answer is come out to be 1 volt. तो इस तरीके से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है R2R लैडर में. सो सिंपली यू हैव टू यूज द फार्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर. तो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का और ये सेकंड तरीका हो गया R2R लैडर का क्वेश्चन पूछने का. और एक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. सो कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 3 नाउ. Calculate the output voltage for the binary ladder network shown in figure. In this case, they guys are not given you any binary number. यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को लैडर नेटवर्क दे के है. फ्रॉम दिस लैडर नेटवर्क यू हैव टू फाइंड आउट द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट टू दिस लैडर. दिस लैडर इज ऑफ अ 3 bit ओनली. सपोज आई कंसिडर दैट 3 bit इज ऑफ A, B एंड C. तो आप लोगों को कितने बीट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? तो 3 bit का ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. सो दैट इज V0, V1, V2. यहाँ तक ही आप लोगों का फॉर्मूला रहेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कितने बीट का है? तो 3 bit का ही क्वेश्चन है. तो हम फॉर्मूला भी 3 bit के लिए लिखेंगे. सो लेट्स सी. VA that is analog output voltage is equal to V0 2 raised to the power 0 plus V1 2 raised to the power 1 plus V2 2 raised to the power 2 upon 2 raised to the power n. In this case the value of n is 3. अभी V0 क्या रहता है बच्चों? तो V0 LSB रहता है. In this case V2 क्या है? तो V2 MSB है. In case of binary ladder, always remember your LSB start from left. तो यहाँ पे आप लोगों का क्या शुरू हुआ है? LSB है. And on the right side there is a presence of MSB. तो V0 कौन सा है? तो V0 LSB है. तो आप लोग पुट कहाँ से करोगे वैल्यू? तो आप लोग लेफ्ट से पुट करोगे.
या सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने का तरीका ये भी हो सकता है, जहाँ से आउटपुट ले रहे हो उस साइड में जो वोल्टेज रहेगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम MSB। ये इसलिए बता रही हूँ कि कोई कोई प्रॉब्लम में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जहाँ से आउटपुट ले रहे हो उसके साइड में ही जो रेजिस्टेंस रहेगा, जहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, वो आपका क्या रहेगा, इन केस ऑफ R2R लैडर MSB रहेगा। तो देखिए, द वोल्टेज अप्लाइड टू द LSB इज +5 वोल्ट। So in this case the value of V0 is +5 volt. So +5 volt into 2 raised to the power 0 plus आफ्टर V0 क्या आएगा, तो सेकेंड बीट आएगा। उसको आपने क्या किया है, तो ग्राउंडेड किया है। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, तो 0। सो 0 इंटू 2 raised to the power 1 प्लस द वैल्यू ऑफ V2 इज -5 वोल्ट। सो -5 वोल्ट इंटू 2 raised to the power 2। कितने बीट का क्वेश्चन है, तो 3 बीट का क्वेश्चन है। सो 2 raised to the power 3 बिकॉज n इज द नंबर ऑफ बीट। So simplify this, 5 into 2 raised to the power 0 is come out to be 1, 0 multiplied by anything is come out to be 0, -5, 2 raised to the power 2 is 4, upon 2 raised to the power 3 is 8, 5 minus 20 by 8, 5 minus 20 is -15 by 8. After solving this, it come out to be -1.875 volt. So this is the answer. This is the analog output voltage for this ladder shown in this figure. Similarly, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए. So please note down this question और आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. Question number 4. What is a full scale output voltage in a 4-bit ladder if the input level are 0 is equal to 0 and 1 is equal to +12 volt. Fifth question, what will be the output voltage of 4-bit R2R ladder corresponding to the binary input A 1110, B 0100, given 0 is equal to 0 volt, logic 1 is equal to 10 volt. Second question जैसा question है ये. What will be the output voltage of a 4-bit R2R ladder type DAC corresponding to the binary input A 1100, B 1000, C 0100. In this case, I am not giving you the logic 0 and logic 1 voltage. Consider logic 0 voltage as a 0 volt and logic 1 voltage as a 15 volt. Okay? Seventh question, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो. Calculate the output voltage in the following ladder network. सिमिलर क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, बट यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा. जो लैडर नेटवर्क आप लोगों को देखे हैं वो रिवर्स हुआ है. यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट कहाँ से निकाला है, तो राइट से निकाला है. यहाँ से अभी आउटपुट कहाँ से निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट से निकाल रहे हो. सो डोंट बी कंफ्यूज. जहाँ से आउटपुट निकालते हैं उसके पास जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा आपका MSB, और यहाँ पे क्या रहेगा आप लोगों का, तो दिस वन इज दी LSB. कितने बीट का क्वेश्चन है, ABC 3 बीट का क्वेश्चन दिया गया है. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों की गलती हो सकती है. साथ में ही दिस इज नॉट अ बीट, दिस इज द ट्वाइस आर रेजिस्टेंस जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है. तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऊपर दिखा के आपको फील ऐसा होता है कि ये 4 बीट का क्वेश्चन है, बट ये 4 बीट का क्वेश्चन नहीं है. दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ट्वाइस आर जो हमेशा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है. तो एक्चुअल में क्वेश्चन कितने बीट का है, तो 3 बीट का है. A, B एंड C 3 बीट का क्वेश्चन है ये. MSB कहाँ से कंसिडर करोगे, जहाँ से आउटपुट ले रहे हो. इन केस ऑफ R2R, in case of R2R, this is just applicable for the R2R, not for the weighted resistor. वेटेड रेजिस्टर में सिंपल रहता है जो हम लोग हमेशा अप्लीकेबल करते हैं. सिर्फ R2R में ध्यान दो, तो जहाँ से आउटपुट ले रहे हो उसके साइड में ही जो आपका बीट रहेगा दैट वन इज योर MSB. दैट्स इट. ओके, सो होप सो यू गाइज आर क्लियर विद द न्यूमेरिकल ऑफ R2R लैडर. जो भी छोटी बड़ी चीज़ों के ऊपर तुम लोगों को ध्यान देना है वो मैंने आप लोगों को क्लियर करके बताया है. बाकी जो न्यूमेरिकल है वो ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं.
बस जो गलतियाँ होती है वो गलतियों को आप लोग इग्नोर नहीं करोगे तो आप लोग यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है। ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। So hope so you guys are clear with this video lecture, this numerical. Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel. Thank you.